Good afternoon, good evening to all of you. Thank you once again for joining on this session today. As usual, Sunil is accompanying me in helping me in navigating this for you. What we plan to do today is to explain to you the automation of the planning process for allocation. What we have told in past when we did previous webinars कि अभी जो हम कर रहे हैं प्रोसेसेस वो हमने उस टाइम भी बोला था कि ये सब हम मैन्युअल करके दिखा रहे हैं ऑटो वी विल शो यू इन द सेकंड सेशन ऑफ प्लानिंग सो दैट इज व्हाई वी आर शोइंग यू द ऑटोमेशन एंड द ऑटोमेशन is not just about the Autoshop, our MRP engine. Yes, it is also, that is also something that we have to cover today. But if you recall our previous sessions wherein we did, in fact, session number 2, if I recall right, which was planning 001. What we did there was that we created an SGO based on OA and forecast. Then we did the CBOM. And after CBOM, I'm not going into the details of what was required in CBOM because that all we have done that time. So after the CBOM was generated, after the CBOM was created, the next activity was to carry out go to allocation work order creation tree in planning module and then allocate the item. So that allocation that we had seen was a manual allocation, and that we had explained as a logical sequence because we started from the CRM module. So from the sequence that we started was lead or inquiry entry, quotation, to follow up, to order booking, to order acknowledgement, to planning cycle, production cycle, subcontracting cycle, purchase cycle, for material received. Wherever required, we have explained to you the connections, master connections and prerequisites in the engineering module and others. So once we have items in stock, we have done the level of production, we have completed the SGO, and we have dispatched the material and the invoice. That was the last cycle that we did. To do that, we did this manual process because we first wanted to logically close the flow. So in 6 sessions, we covered logically close the flow. Now we are going into the other features that the system has. So the first important feature that we have to discuss today, for today meaning our today's session, is what is the process of automation as far as planning is concerned. पहला तो auto allocation में जतो रहे. Let us start with that. पहला allocation work order creation, please open that so that we can show what we did. Yeah. Just for, since more time has gone prior to this, maybe second session to 7th session, so I'm not saying that you may remember everything. So as we go along and we try to open an SGO, just show the allocation screen, then keep that open. So here on the right click of the mouse, yeah, we are, sorry, yeah, we are showing allocate item, as you can all read on your screen. So this is the process of manual allocation, right? Sunil, please open the screen of auto allocation. In the screen of, in the function of manual allocation, we have to search one by one item and allocate it if there is
This would be usually used by the people who are into very specific, they want to have some allocations and somehow they cannot follow the auto route. There are business cases for that. Uh, that uh, like some people who are into specific projects and they still don't have the traceability number, we tell them that you should do it, but in such cases they may have to do this. So please look at this function that we are showing. The first process of automation is called auto allocation. So we have selected an SJO, the allocation and all the activity, as I had said, the container is SJO. For that SJO container, whatever are the items required for the fulfillment of manufacturing or assembling, because we are seeing the item in front of us as computer. So I'm just saying that whatever is required for that, whatever is the items required below that need to be allocated. So we are allocating through the process of auto. We are just selecting the warehouse, excisable, that's fine. And we allocate the item and we save. See, as regards to the previous screen, Sunil, I suggest you keep that screen also open so that they can see parallelly what is the difference. On this screen, at any child, wherever we are, we just say allocate item. Haji, ek baar, please do that. Yeah, click that. Allocation. Item. Okay, okay. So since there is no pending, it says gives a message. Yes. Here we can do the just for the screen purpose. I am just saying that this is the manual allocation that we can do here. Now let us go to the auto. As you can see, here we have selected the whole thing. The whole tree comes to you and then one by one we have to do it. Whereas in this case, in auto allocation, we are only saying that which are the warehouses from which I need to allocate. हाँ, इतना ही है कि ये मैं ऑटो एलोकेशन में मैं कौन कौन से वेयरहाउस में से कर सकता हूं, उसका जो कंट्रोल है वो एडमिन मॉड्यूल में हमने जो एडमिन और इन्वेंटरी में हमने जो रिस्ट्रिक्शन किया है कि कौन से साइट का कौन से वेयरहाउस को कौन से यूजर को एक्सेस है, तो यही चीज सुनील करेगा तो शायद उसको एक वेयरहाउस एक्स्ट्रा भी दिखेगा, because he may have that permission to look at that warehouse and I may not have. So sometimes in the implementation stage or post implementation support stage, we come across these situations that user comes back to us और आके बोलता है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है, देखो ये वेयरहाउस में, लेकिन मैं एलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ. Maybe because the person does not have the warehouse rights. So if that is the reason, he may not be able to carry out the allocation from that warehouse. So that is a control that we have built if somebody wants to use it at that level, right? So once here we say save, that means whatever is the bill of material items which are pending at this point of time for allocation, if they are available as free on hand in these warehouses selected below, then it will get saved, or it will get allocated, I'm sorry, on the save button. Yeah, so that is the purpose of auto allocation. We will not see anything in the front end except that when we see pre this function and post this function a report of allocation done and issue pending, or if we see a shortage report, we will see this difference. Earlier this was not allocated, now if the item is available, it is allocated.
So in the process of automation, wherever it is, yes, so please show this report. Allocation done, issue pending. In this report, we can select one or more SGOs. And when we do that, if we try to select some item, yes, as you can see, these reports also can be sent through email. Right? So this would be the difference. As you can see on your screens, Sunil, can you zoom? Yeah. Zoom in. Yeah. Right? So these items are there, correct? For this way, this is the child item which is key 001, MS sheet, right? Now, what was allocation and pending, right? And what is issue? If it is issued, this will go away, right? If allocation was not done, then previously, if you run this report, you might see this as not these items will not come because this is not allocated. Allocation done, issue pending. Allocation ही नहीं हुआ है तो देखने के लिए आपके पास शॉर्टेज रिपोर्ट, तो शॉर्टेज रिपोर्ट में आप देखेंगे तो पता चलेगा. This is the cross verification that I am seeing, right? So this is the process of auto allocation. Now, important thing that I would like to highlight is the process of deallocation before we go to the next level of automation. What is the importance of deallocation? The importance of deallocation is when I have a conflict of priority, मेरे पास मटेरियल जो अवेलेबल है, जो अभी मैंने शॉप पे इश्यू कर दिया है किसी एसजीओ के सामने, लेकिन प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट हुई, किसी दूसरे कस्टमर को अभी मेरे को ये उसकी अर्जेंसी है. मे बी दैट आइटम इज रिक्वायर्ड इन टू बी सेंट एज अ स्पेयर एज वेल, उसकी स्पेयर फुलफिलमेंट के लिए, और ये तो अभी मशीन बिल्डिंग तो लंबा चलने वाला, ऐसा कुछ एक्टिविटी. तो इस कस्टमर की अभी रेडीनेस नहीं है मशीन की, पहले मैंने इश्यू करके रखा था या तो एलोकेट करके रखा था, तो एलोकेट भी किया है या इश्यू भी किया है, दोनों स्टेज में हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन. प्लीज माइंड एंड लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली और सेंटेंस वेरी केयरफुली, कि हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां एलोकेशन हो चुका है एंड इश्यू भी हो चुका है, या तो ओनली एलोकेशन हुआ है, बराबर है. ये कोई भी सिचुएशन में, या तो तीसरी सिचुएशन है कि हमने प्रोडक्शन में जाके टाइम बुकिंग करी है अभी, लेकिन क्वांटिटी बुकिंग नहीं करा है. अगर मैंने क्वांटिटी पेरेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तब तक मुझे चाइल्ड को रिटर्न करने का, मतलब कंप्यूटर बनाने के लिए अगर मुझे माउस चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, अगर मैंने कंप्यूटर का ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर जिसको हम एसजीओ बोलते हैं, उसको क्लोज नहीं किया है, या तो उसके नीचे जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट का हमने वर्क ऑर्डर क्लोज नहीं किया है, तब तक आप उसके नीचे का डाउन दैट द चाइल्ड्स दैट यू कैन act upon depending upon the priority. You may be able to return them if they are issued. If they are not issued and just allocated, then you can deallocate them. Even if they are issued, then you have to return that. Once you return, they are still treated as allocated to that SGO. So you have to deallocate from that SGO. So once you do that step by step process, शॉप को मैंने दे दिया है तो शॉप से मुझे वापस लाना है और प्लानर को इस एसजीओ से डीएलोकेट करना है, और जब डीएलोकेट हो जाएगा तो ये फ्री ऑन हैंड क्वांटिटी में दिखने लगेगा. फ्री ऑन हैंड क्वांटिटी में दिखने लगेगा तो जो एसजीओ की प्रायोरिटी है, या तो किसी कस्टमर ऑर्डर के सामने उसको सेल्स एलोकेशन करके मुझे डीसी बनाना है, मे बी एज अ स्पेयर, सो आई ओनली देन यूजर act upon. That is why in today's
webinar session, what we have tried to do is we are going to cover all these additional processes which are just not just the automation, but what is required by the planning people. So this is in fact very, very important uh, for the people who want to use our IMMS New Horizon very effectively. They should understand how to manage this, because materials management and materials planning is the key to the whole thing. So ये people पे हम ये भी normally recommend करते हैं कि planning should be a central function of course for a given manufacturing site. उस प्रायोरिटी पे, उस साइट पे जो जो कस्टमर ऑर्डर्स की या तो स्टॉक के ऑर्डर्स की प्रायोरिटी है, उसके बेस पे प्लानर को काम करना चाहिए. तो ये करने के लिए हम जो अभी कह रहे हैं वो है, अभी प्रायोरिटी की मैं जो बात कर रहा हूँ उसका भी ऑटोमेशन कैसे करना वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे. लेकिन ऑटो एलोकेशन हमने दिखाया. अभी मैं जैसे बोला, फॉर बिजनेस कंपल्शंस that item which is either allocated or issued to another SGO needs to be brought back to stores and be reallocated to another SGO, or maybe sales allocation is done and sent to customers. What a user is required to do is, irrespective of the return process is done, he has to then also, planning person has to do the deallocation. So what I am trying to show you now, on we are trying to show you on the screen now, is the process of deallocation. Now, so deallocation, like same on the operational side. If you can see, as we were doing on the right click, we were allocating. Here on a right click, you can deallocate, because we are doing the manual process. As you can see here, it says 10 quantity can be deallocated from which was allocated from this warehouse, right? So if I deallocate say 2, okay, 10, what I 2 karne? Yeah, I can partially also deallocate, and I deallocate. This will trigger a change in the system that 2 quantity is now deallocated. So it's just be here on the screen. As you can see, it still expects that now allocated has happened 10. 2 more you need to allocate. That is what the system has immediately changed the data, right? And these 2 is now getting available for any other priority that organization may have, right? So this is the process of manual deallocation. Like I explained the process of auto allocation, we also have the process of auto deallocation. And I am pretty sure that my this SGO is now not stand priority. So whatever material I have already allocated, I should take it back and make it available as free on hand to fulfill requirement of another SGO. I can straight away, again, warehouse selection is important because the deallocated material will be available, made available as free on hand in those warehouses only. When you say auto, you can do it obviously for selected warehouse, or maybe as many warehouses for which you have the authority. So when you do the deallocation, again, there is a save button on the screen, nothing else. But when you do the save, system will understand that this material has to be moved again back from allocated to free on hand. Please understand and remember. No, I understand that it may not be possible to do it in 1 or 2 sessions, but as you see the whole cycle, which is for the through the webinar, we are using the common terminology which is there, so you can understand that if I do the auto deallocation, the material will come back to my free on hand stock. Free on hand is a terminology that we are using
that material is available for further action by the paying people. Allocated is not available. One has to deallocate. This is the purpose that I wanted to tell you. So today we have covered so far the difference between allocation and auto allocation, and deallocation and auto deallocation. So automation processes two automation processes we have explained: auto allocation and auto deallocation. Now let us go to the third important thing, which is sequencing the customer orders and SKUs. So we just go to the sales module and show them the screen of CRM module. Yeah. Yeah, OAF sequence. Just go there. Yeah. Can you see this? So this screen, we can कोई बीजी site ले लेना नानी. The other one, dealer. Just for the simple. Okay, there is no data here. We just wanted to show you, but please understand the skills that are available. So we allow prioritization in the system based on two priorities that users can choose. First, the sales. This is the menu given in functional given in sales. Sales can decide that for this particular OA, which is my priority. What we are not seeing here, we will be able to see. So we parallel my SGO screen, they can relate. See, like here, all the pending SGOs are already selected. Default sequence is the date of delivery. Don't go by the data. The normal default delivery is the delivery date is the default sequence. You can change the sequence as you wish. And once you change the sequence, if you take something one or two from two to one, just ben as you can see, there is a cursor blinking here and there is sequence number one. I just make it and instead go to next. Go to next. Next वाले row में जाओ. Just make it one there and see the impact. Yeah, save. See the difference. What was first has become second has become first. First has become second. So similarly, this is for the SGOs. This is for actually the manufacturing cycle. Similar thing is available for customer order selection as well. Whatever customer OAs have given, that means OA is a confirmed execution cycle that we have agreed. So sales team can decide customer order priorities, and planning can then decide SGOs within that OAF sequence or irrespective of the customer priority, right? So this is the functionality that we have built. But right now what you are seeing is the screen of either sequencing the OAF, which you should we have provided in the sales, because either the sales team does it themselves or the sales team have to inform the planning team that this is the priority of my customer order. The reason of having a customer order and SGO two different sequencing is that, as we had discussed and explained, one customer order may have more than one machine or equipment to be sold. To make it that way, you have to have two SGOs. It is one OA, two
many SEO relationship. If I do not prioritize the customer order, and if I just prioritize only the SEO by overlooking the customer order OA, then I might do a wrong selection. मैं किसी एक कस्टमर का एक SEO ले लूंगा, किसी दूसरे कस्टमर का एक SEO ले लूंगा, और अगर बिजनेस की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि दोनों रेडी होने पे भेजना है, तो मुश्किल ये हो जाएगी कि दोनों का मशीन बन के आगे एक्टिविटी में रहेगा, लेकिन आप उसके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं कर पाओगे जब तक ये कंप्लीशन नहीं होता है. सो उसके ध्यान में रखते हुए डिजायरिंग demanding customer priority from sales. If planning has to do this job, if the company SOP says that they need this job, planning has to do, fine, but planning should be given this from the sales team, right? Based on that SEO selection, which is available on your screen now, the priority can be done by the planning person, right? So two sequencings are important, and as you have seen, just for random Sunil, you can select say 400, yeah, anything, and just make it number 3. Just remember, yeah, 7067, you can make it number 1, yes, right? So it has become number 1, and automatically the rest of the priorities have changed. So this is what we need to understand, that sequencing is only sequencing. The next automation process, when we go, that is Autoshop. At that point of time, user will get to see the data in the sequence that sales and or planning team have chosen. Authorized people from sales and or planning team have chosen, right? So let's go to our very important function called Autoshop. Autoshop, we can do it for a particular SEO, or we can do it for a particular OAF, or we can do it as per the sequence, right? Right now, our interest is to show you functionality of Photoshop. So we are not selecting multiple. The reason is very simple. We have showed you that whatever sequence you have decided, based on that sequence, the Autoshop will start executing. So available material, it will start allocating in the order of priority sequence that you have defined. 1 for OA and 2 within OA SEO, or independently the SEO sequence, right? So this is important for people to know. Now, what does Autoshop do? That is something that we need to understand, right? What does Autoshop do? Autoshop does, as you can see on your screen, Autoshop options, whether you would like the deallocation to be done. So this deallocation will trigger the auto deallocation for the SEOs that you have sequenced here, right? This is within this tool is specifically for, in fact, Sunil, please go a little. Important thing is obviously to select the site. This you can set up for a scheduled time, like tier 1 ERP systems of MNC. They have this process. Usually people have been setting this process in the evening. Similarly, we have identical feature and facility where some of our customers, large customers whose bill of material run into thousands of items, and they have multiple SEOs on the shop and customer orders concurrently running. For them, this is their very, very, very critical activity. The day which they decide, they have a planned schedule to run Autoshops, whether on a day-to-day basis or twice in a week, maybe once in a week, depending upon the exigencies.
In between, if there is an urgency, they can always use the manual or the selected auto function. So that facility they do have. So time is something that why this process has to be done ideally in the off server, because system can at that time, if there is any online real-time transaction going on, it would be appropriate that we do it in such a way that then the priorities are properly honored, right? So that with that, and this is obviously the resource, it requires more resource, so it is better that it is in that at that time. When I say more resource, there is no need to get panic that will system not work if I do it during the time. It will work. Don't worry. But we recommend this that when there are multiple OAs, multiple SGOs, we would recommend to run it on for your better operations. We would prefer you to run it on the off the normal working hours, right? So that is one thing that I wanted to tell you. The other thing that I wanted to tell you is whether you would like to run based on the SGO, whether you would like to run based on the OAF or both. And third thing is minimum inventory level. As you can see, all three are selected, right? But I will talk to you about MIL a little later, right? Once I say my priority is only SGO, SGOs will come in order. Now, the next thing that Autoshop क्या करता है? पेलू 5 function. Where is that? So deallocation ने yes, select कर એટલે ना cancel કરીને हाँ. Yes. So what are the functions built into this MRP engine called Autoshop? आपने जो प्रायोरिटी डिफाइन की सीक्वेंस ओए का और एसजीओ का, उसके ऊपर क्या पहले अभी तक जो एलोकेटेड मटेरियल है ये भूल जाना है, मुझे हमेशा फ्रेश प्लानिंग करनी है या हमें इंक्रीमेंटल प्लानिंग करनी है? ये जो बिजनेस पॉलिसी कंपनी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि I want to do fresh planning every time for all the jobs that are on the system hand and the priority is given, or I want to do this only for particular thing, right? So मुझे अगर जो सब कोई मटेरियल को मुझे निकाल देना है, sorry, incremental thing, my mistake. So if I want to do it for incremental, I need not use the deallocation function. Sorry. What does deallocation do? It does deallocate the material in the sequence in which you have defined the SGOs. So it will start deallocating and make all the allocated material as free on hand for the next operation called allocation. So it runs usually in sequence that you either deallocate if you choose to. If it is incremental, then you do only allocation. Now, these three things are the actual functions on which the actions are taken. You all know how does the material planning process work. Material planning में दो चीज होती है, either I have make items or I have buy items, or the third feature that we have is job work items. Depending upon my business rules that I have, मैं जो warehouses select करूंगा, in warehouse selection is required. Once I select the warehouses, उस warehouse में
System देखेगा based on the priority given जब then the Autoshop is run, that whether the item is available as free on hand, then it will allocate. Then it will go to the next, then it will go to the next, it will go to the next. Till such time, all the SGOs or all the OA-based SGOs which were considered in today's Autoshop sequence by the planner, right? There is, as I told during the planning one cycle, in the SGO, we have a provision for planning start date as well. So this grid of Autoshop will only populate those SGOs where my planning start date is, yes, it is current, it is valid. अभी मेरा प्लानिंग स्टार्ट डेट जिसका आया ही नहीं है, सपोज ऐसा समझो कि 1 जून को आने वाला है, तो वो उसके लिए मटेरियल आज से एलोकेशन में आपको बीच में आएगा नहीं, राइट? सो अभी की मेरी जो प्रायोरिटी है उसी के ऊपर ये फोकस करना चाहिए. तो डी एलोकेशन है वो डी एलोकेशन कर देगा, उसी का एलोकेशन है वो इसी सीक्वेंस में उसको एलोकेट करके फ्री ऑन हैंड से निकाल के एलोकेट में ला देगा. अभी जैसे मैंने बोला, मेरी बाय आइटम है या मेक आइटम है या स्ट्रेट अवे जॉब वर्क आइटम है. स्ट्रेट अवे जॉब वर्क मतलब मैं कभी इनहाउस काम नहीं करता हूं. इस आइटम बनाने के लिए मैं हमेशा रॉ मटेरियल भेज देता हूं और उससे जब फिनिश बन के आती है तभी ही मेरा प्लानिंग की नेक्स्ट एक्टिविटी चालू होती है. सो when this is run, system looks at the allocated free on hand stock, it allocates. If it is not there, what does it do? If the buy item, it creates an indent. I'm just giving you right now the simplest scenario. Actually, it is more complicated, which I will, or detailed, not complicated, which I will explain. बाय आइटम के लिए इंडेंट बना देगा. मेक आइटम को मुझे जॉब वर्कर से बनवा के लाना है, उसका इंडेंट बनाएगा, सॉरी वर्क ऑर्डर बनाएगा, दैट इज द जॉब कार्ड दैट वी हैड सीन. एंड अगर मेरी हमेशा बाहर बनने वाली सब कॉन्ट्रैक्टिंग आइटम है जिसके लिए मैं चाइल्ड भेजूंगा और पेरेंट बन के आएगा, ऐसा सिंगल ऑपरेशन ही मैंने प्रोसेस शीट में डिफाइन किया है, तो उसके लिए लेबर इंडेंट, right? So labor indent will be created for items where there is an outside operation as a part of my manufacturing sequence. तो ये कर लेगा. अभी ये करने से पहले क्या करेगा? As far as purchasing, because every company is interested in controlling their inventory. तो अगर मेरे पास जो आइटम स्टॉक में है उसको एलोकेशन मैं कर ही सकता हूं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. सो एमके आइटम्स में या एएस आइटम्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास कंपनी में पड़ी है, मैंने एलोकेट कर दिया, बराबर है. मेरे पास नहीं है, मेरी शॉर्टेज है, मैंने वर्क ऑर्डर क्रिएट कर दिया, बराबर. ये दोनों क्लियर है. लेकिन बाय टाइप की आइटम्स के लिए और एक सिचुएशन भी हो सकती है. वो ये है कि अगर मेरी कंपनी की फिलोसॉफी खाली जॉब बेस्ड परचेज करने की नहीं है. जॉब बेस्ड परचेज मतलब जब तक डिमांड ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो, मैं खरीद नहीं हूं और मैं उतना ही खरीदता हूं जितना मेरी एसजीओ के सामने या तो ओएफ के सामने रिक्वायरमेंट है. अगर ऐसा कंट्रोल नहीं है, वहां पे हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि पीओ के टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा मटेरियल, या तो केस जैसे हमने परचेज में देखा था, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ज्यादा पीओ क्वांटिटी हो या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के कारण हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वांटिटी हो, तो एसजीओ की जिसको लिंक लग चुकी है उसके सिवा जो सरप्लस मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं परचेज पाइपलाइन, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वे कि अगर मेरे पास सिस्टम क्या देखता है, ऑटोशॉप में सिस्टम देखता है कि क्या मेरे पास ऐसी कोई जीआरएन्स पड़ी है जिसमें ओएएफ का या एसजीओ का रेफरेंस नहीं है, और इसका नहीं है मतलब कि ये अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट यूजेज फॉर एनी प्रायोरिटी एसजीओ दैट द सीक्वेंस में हैव सेट. तो अगर उसको मिल जाता है तो उसी को ये पहले जीआरएन को वो पहले लिंक एस्टैब्लिश करता है कि ये जो मेरी जीआरएन है उसमें जिसमें स्टॉक की जीआरएन है उसमें
ये एसजेओ की या तो ओए की लिंक को एस्टैब्लिश करेगा। तो क्या होगा, इतनी नई डिमांड करने के लिए लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी है और किसी के लिए रिजर्व भी नहीं है, तो मैं अभी रिजर्व कर रहा हूँ, बराबर है। सो दैट इज एट द जीआरएन स्टेज। व्हेन आई से जीआरएन और क्यूसी ऑफ जीआरएन दोनों, क्योंकि जहां पे मेरे पास एसजीओ की लिंक नहीं है ऐसा। अच्छा, दूसरा केस जो है वो है जो परचेज मैंने बोला, ईओक्यू का केस हो, एमओक्यू का केस हो, या तो दोनों केस नहीं हो, फिर भी परचेजर ने बोला है कि आपको, परचेजर को अपने परचेजिंग को ऐसा लगता है कि ठीक है इसकी रिक्वायरमेंट 2 3 4 में मिलके 80 तो आ गई है, इट वुड बी बेटर दैट आई बाई 100 क्वांटिटी। वो परचेजर का डिसीजन है जिसके ऊपर उसका सीनियर उसको अप्रूव करे। तो 80 के बदले उसने 100 का ऑर्डर किया है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट द फ्रेट इज चीपर और ही इज रिड्यूसिंग, द वेंडर इज रिड्यूसिंग द रेट, क्या आप 100 ले लो तो मैं पैसा कम करता हूँ, कुछ भी हो। तो अगर मेरी जियो बेस्ड रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैं जब परचेज करने जा रहा हूं, तो मेरे पीओ में वो 20 के सामने 80 की रिक्वायरमेंट है, 80 की अलग अलग जॉब्स में, 20 के सामने कोई एसजीओ की या ओए की लिंक नहीं है। सिस्टम समझ रहा है कि ये भी जब स्टॉक में आएगा तो मैं उसको सीधा यूज कर लूं, उसका अभी से मेरे को पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नया खरीदना ना पड़े, वैसे भी ये सरप्लस होने वाला है। तो सिस्टम जैसे लिंक लगाता है ऐसे ही पीओ को लिंक लगा देता है, ओपन पीओ जिसको हम बोलते हैं, ओपन जीआरएन या ओपन पीओ। ओपन जीआरएन और ओपन पीओ का हमारा मतलब है कि आपका ट्रांजेक्शन, ओपन पीओ और ओपन जीआरएन में जो फ्री और जो जिसमें लिंक नहीं लगी है ऐसे आइटम्स के क्वांटिटीज, इसको हम ओपन बोलते हैं। तो यही चीज एक्सटेंड होके जाती है पीछे। सो जैसे मैंने बोला कि नहीं जीआरएन में मेरे पास कुछ नहीं है, 100 की रिक्वायरमेंट थी किसी की पहले, 80 की रिक्वायरमेंट थी, परचेजर ने 80 का पीओ के बदले 100 का पीओ बनाया है, तो ये 20 है वो भी सिस्टम पाइपलाइन को भी एलोकेट करेगा दिस ऑटोशॉप। सो उसमें से अगर 10 की रिक्वायरमेंट है या उधर उस एसजीओ में जो मेरी रिक्वायरमेंट है जब प्रायोरिटी में आया तब सपोज समझो 30 थी और मेरे पास पाइपलाइन क्वांटिटी 20 ही दिख रही है, तो सिस्टम क्या करेगा और भी पीछे जाएगा, इंडेंट में भी देखेगा, ऐसा कोई मेरे को इंडेंट दिख रहा है जिसमें कोई एसजीओ की लिंक नहीं है तो उसमें मैं लिंक लगा दूं तो मेरा एक्सेस परचेज ना होने पाए। बट ऐसा समझ लो कि ना तो मेरे पास जीआरएन में लिंक है, लिंक के बिना का जीआरएन है, मतलब ओपन जीआरएन है नहीं है, मेरे पास ओपन पीओ भी नहीं है, मेरे पास ओपन इंडेंट नहीं है। तो सिस्टम को क्या एक्शन करवाना है कि भाई तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा उसके लिए जो मटेरियल का इंडेंट जो बनाना है वो सिस्टम विद दिस ऑटो रेफरेंस बनाएगा। तो इट विल कंटेन क्रिएटिंग एडिशनल purchase requirement or purchase indent till such time it looks at your allocated it looks at your free on hand stock, फ्री ऑन हैंड स्टॉक के बाद ऐसी पाइपलाइन और पाइपलाइन जीआरएन और यूसी की, फिर पीओ की, फिर इंडेंट की, और वो कोई भी क्राइटेरिया में ये नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है गवर्नमेंट के साथ, तो मेरा आई एम सॉरी मेरा ये जो है वो सब एसजीओस के सामने रिजर्व्ड है। तो जो मेरा उन दो केस में मेरा सीधा इंडेंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब आई नीड टू बाय, similarly for the make items or assembly items it will create a work order, and as I said for the job work items it will also create the labor indent। so ऐसे जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये 4 को ठीक है, मतलब ये 4 प्रोसेस ऑटोशॉप अभी कर रहा है। प्लीज पे अटेंशन टू वन मोर थिंग हियर, दिस कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक या तो मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री में एक हमने फीचर रखा है, मतलब सेफ्टी स्टॉक से अंदर जाके उससे नीचे जाके क्या आपको एलोकेशन करना है, अगर आप सेफ्टी स्टॉक से आगे भी जाके एलोकेशन करना चाहते हैं तो उतनी
कम मात्रा में इंडेंट क्रिएट होगा, ये समझ लेना भी जरूरी है, बराबर है। और कौन कौन से वेयरहाउसेस, जैसे हमने आगे मैन्युअल ऑटो वाले प्रोसेस में देखा, कौन कौन से वेयरहाउसेस को मुझे सिलेक्शन करना है, ये वेयरहाउसेस को मैं जो सिलेक्ट करूंगा, उसी वेयरहाउसेस में जो फ्री ऑन हैंड पड़ा है और पाइपलाइन में ये वेयरहाउसेस दिख रहे हैं, उसको सिस्टम अपना बेसिस मान के आगे का काम करेगा। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया 10 मेरी रिक्वायरमेंट है, बराबर है। पहले का जो था उसमें से पाइपलाइन में से मुझे मेरी 30 की रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन से मुझे 20 मिल गए, तो 10 का इंडेंट क्रिएट करेगा बाय के लिए, नहीं के 30 का। तो इट विल कंटेन unnecessary inventory requirement. So this feature of Autoshop is very essential, बराबर है। और इस आइटम में जो बोल रहा हूँ, इसमें मेरे पास सेफ्टी स्टॉक में कुछ है ही नहीं, तो मतलब मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग इसके साथ ये भी है, इसका ऑटोशॉप जो प्रोसेस करता है उसका डिटेल्ड लॉग रखता है, और ये लॉग सिस्टम में प्रिजर्व होता है, हम संभाल के रखते हैं। तो ऑटोशॉप का जो जो रन हुआ उसका डेट टाइम स्टैम्प के साथ सिस्टम ने क्या एक्शन लिया वो सिस्टम में रहता है। तो यूजर की को कभी भी रिकंसिलिएशन करना हो, यह लगता है कि सिस्टम में ये जो हुआ है वो सही है कि नहीं, उसके लिए पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। सुनील भाई, आपको ऑटोशॉप लॉग किया हुआ लॉग दिखा दो, बिकॉज यहाँ से सेव करने से तो पीछे प्रोसेस चल जाएगा और कुछ can also be generated in Excel, but पहले को स्क्रीन पर देखा तो पहलू ना स्क्रीन, या ये आप देख रहे हैं जैसे सिस्टम क्या रहा है, ऑटोशॉप प्रोसेस का स्टेटस क्या है, कौन सी साइट के लिए क्या हुआ, स्टार्ट किया, बराबर है, कंप्लीट किया, स्टार्ट किया, कंप्लीट किया, ये सब बताएगा, कितने बजे स्टार्ट किया, राइट। कौन से ओएफ के लिए, ये तो अभी जो दिखा रहा है वो बिकॉज ओएफ हमने लिया नहीं था उसके लिए। यहाँ पे देखो हमने एसजीओ लिया, तो इस एसजीओ के लिए हमने जो क्या क्या किया आप देख लो। स्टार्ट किया, हार्ड डिस्क का इंडेंट क्रिएट हुआ, देखो एसजीओ के बेस पे इंडेंट क्रिएट हुआ, 1674 नंबर का इंडेंट क्रिएट हुआ, कौन से चाइल्ड का, हार्ड डिस्क का। उसी इंडेंट में सेकंड चाइल्ड क्रिएट हो गया माउस का, बराबर है, ये कंप्लीटेड है, तो दोनों इंडेंट क्रिएट हो गए। कौन से ओएफ सीक्वेंस के लिए हुआ, ओएफ नंबर के लिए हुआ, कौन से एसजीओ के लिए हुआ, और डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो इंडेंट जो बना उसका भी नंबर देखो, आप देख रहे हैं 231 231। तो स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखने मिलेगा, और आपको एक्सटर्नली देखना है तो आपको एक्सेल भी मिल जाएगा। Right? So this is the same thing available to you in Excel, so that if you wish to do anything further on this, you can see. ये 3802 नाम के OA 7067 नाम के एसजीओ के सामने मुझे ये हार्ड डिस्क को ये दो चीज मिला नहीं, उसके लिए मेरा ये शॉर्टेज जनरेट हुआ है। ऑफ कोर्स हमने डी एलोकेशन प्रोसेस नहीं लिया था, तो एलोकेशन जो पहले हुआ था वो इंटैक्ट है, प्लीज माइंड कीप दैट इन माइंड, जो पहले मैंने किया था वो इंटैक्ट है। तो सिस्टम क्या क्या करता है, जैसे हमने बोला एलोकेशन करता है, फिर वर्क ऑर्डर क्रिएट करता है फॉर मेक आइटम्स, क्योंकि वो इट लुक्स एज, इस प्रोसेस में ये देखता है तब टॉप टू बॉटम देखता है कि क्या मुझे रेडी मेक आइटम या असेंबली आइटम मिल गई, तो मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अगर वर्कआउट, तो मुझे वर्क ऑर्डर कब क्रिएट करना पड़ेगा, जब मुझे रेडी पेरेंट नहीं मिलेगा। पेरेंट रेडी नहीं मिलेगा मतलब सेकंड लेवल का, और डाउन द लेवल जो भी लेवल है वो मेरे को नहीं मिला, तो मैं वर्क ऑर्डर क्रिएट करूंगा। उसके बाद उसके नीचे के चाइल्ड है वो एलोकेट अगर नहीं हो पाए, शॉर्टेज है, तो उसका इंडेंट, और पाइपलाइन में भी नहीं है तो उसका इंडेंट क्रिएट खड़ा होगा। और ये लेबर इंडेंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर इसमें कोई आउटसाइड प्रोसेस था तो उसके लिए ये क्रिएट होता था। तो ये एक्सप्लेन कर हमने आपको एक्सेल में ले जाके दिखाया, बराबर। और वही चीज यहाँ लॉग के टाइम पे
आपको अवेलेबल है, जो सिस्टम में हमारे पास हिस्टोरिकली रहता है, बराबर है। तो ये सिस्टम से आपको ये प्लानिंग की, ये हमारे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल and clarity on your planning, and you can always backtrack because each Autoshop run is maintained with date and time stamp. So फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैन्युअल जब एलोकेशन करते हैं तब आइटम टू आइटम डेट टाइम स्टैंप लगाना प्रैक्टिकल नहीं है इतने सारे एसजीओज में, बराबर, आइटम टू आइटम, और वो कम्बरसम प्रोसेस भी है। ऑटो में भी है, बराबर है, कि कब हुआ करके, लेकिन ये जो है वो पाइपलाइन भी देखता है और इतने सारे प्रोसेसेस को साथ में मिला के बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज कर देता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। I'm sorry, I'm not too sure whether I will have to check and come back to you, which I will do, whether uh, allocation का time stamp लगता है कि नहीं, that I will come back to you. I will not like to give any inappropriate या incorrect information to you. I will come back to you on that because such a huge system, sometimes I also may not recollect and may say something incorrect, which you should not then carry that impression. That is why I will come back to you on that. कि ये डेट टाइम स्टैम्प का क्या है, बट इंपॉर्टेंट ये है, एलोकेशन में आप एसजीओ एक ले सकते हैं, ऑटोमेटिक में, मैनुअल में, ऑटो में भी आप एक ले सकते हैं, लेकिन चाहे सब सिलेक्ट हो जाते हैं। एमआरपी में, ऑटोशॉप में जब जाते हैं तब ये खाली इतना नहीं करता है, ये आपके वर्क ऑर्डर्स भी क्रिएट करता है, जॉब वर्क के इंडेंट्स भी क्रिएट कर देता है, और परचेज के इंडेंट तो भी क्रिएट करता है जब ये उस साइकिल से पास ना हो जाए कि मेरी बिना लिंक वाली, मेरी जो आके स्टॉक में पड़ी रहने वाली है, ऐसी कोई आइटम्स अवेलेबल है कि नहीं। ये आज के दिखाने का सबसे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट मकसद था। The objective was to show you these processes of automatic allocation, manual deallocation, पहले और मैनुअल एलोकेशन दिखाया, फिर मैनुअल डीएलोकेशन, ऑटो एलोकेशन, ऑटो डीएलोकेशन एंड ऑटो शॉप, विच इज कंबाइनिंग ऑल दिस, क्योंकि इसमें जैसे हमने बोला ऑटो डीएलोकेशन भी है, ऑटो एलोकेशन भी है, और ऑटोमेटिक क्रिएशंस ऑफ वर्क ऑर्डर, लेबर इंडेंट एंड मटेरियल इंडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम कंट्रोल्ड एक्टिविटी में मटेरियल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये मुझे आपको खास बताना था। इसके सिवा प्लीज गो टू द मेन्यू प्लानिंग। सो मटेरियल प्लानिंग के तौर पे, yes, this is also important that I would like to show you, which you are seeing as the last thing on your screen for disassembly. ये भी समझना जरूरी है कि कभी मैंने वर्क ऑर्डर रिसीव भी कर ली, मेरे पास कोई भी लेवल पे मेरा मशीन की असेंबली या तो पूरा मशीन बन चुका है, सो अगर मेरी प्रायोरिटी चेंज हुई कस्टमर के कोई भी कारण से, और मुझे इसमें से कुछ मटेरियल निकाल के किसी और एसजीओ को या कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करना है, तो मैंने, आप यू प्लीज रिकॉल माय टुडेज सेशन, माय वर्ड्स, कि आप कब तक रिटर्न या डीएलोकेट कर सकते हैं, जब तक आपने क्वांटिटी बुकिंग करके प्रोडक्शन रिसीव नहीं की है। नाउ आई एम गोइंग ए स्टेप फर्दर, क्या आपने प्रोडक्शन रिसीव भी कर ली है, और जो उसके हायर लेवल का पेरेंट असेंबली हो, चाहे कंपोनेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सब असेंबली हो, चाहे पूरा मशीन क्यों न हो, आपको डिसअसेंबल करने का भी ऑप्शन सिस्टम में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स, एज यू कैन बिल्ड द बिल ऑफ मटेरियल स्टेप बाय स्टेप, सिमिलरली डिसअसेंबली विल आल्सो नॉट, ऐसा नहीं होगा कि मेरा मशीन बन गया है और मैं सीधा जाके अंदर से कहीं बीच से, कैन आई डायरेक्टली टेक आउट any item? No, I have to do it stage by stage. So many people, I have to make this clarity, because many people do not, our customer end, are not able to relate that
any equipment or machine manufacturing is a step-by-step process. So in disassembly also you have to follow the step-by-step process. सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं होगा कि डिसअसेंबली हमने रखा तो कोई भी मैं कहीं से कहाँ भी निकाल दूं? अरे भाई, स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल ऑफ मटेरियल में जितने लेवल्स क्रिएट किए थे उस लेवल से सिस्टम ने आपने ही किए थे, उसी के हिसाब मतलब अपने मतलब हमारे कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन ने जो डिफाइन किया था, प्लानिंग ने जो किया था, उसके चलते बिल्डिंग एक्टिविटी हुई थी। तो डिसअसेंबली भी वही ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाया जाए वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो वी कैन सजेस्ट टू देम लाइक द जनरल केस। कभी कभी क्या होता है कि नहीं मेरे को मोटर की प्रायोरिटी है, सो ठीक है, उस लेवल पे आप एज बिल्ट वाला बीओएम में भी दो कंसेप्ट होते हैं, एज बिल्ट एंड एज परसीव, सो और एज रिक्वायर्ड। तो एज बिल्ट वाला बीओएम ना रखें आप तो, और आपको ऐसी लगती है कि जो मेरी ऐसी आइटम्स हैं जो मुझे कभी भी प्रायोरिटी चेंज होने के कारण उसको अलग से लेनी पड़े, तो उसको आप अलग टॉप पेरेंट के सामने अलग रख सकते हैं ग्रुप में। मतलब यू कैन डिफाइन योर बिल ऑफ मटेरियल ट्री इन सच ए वे दैट लास्ट का वर्क ऑर्डर क्लोज नहीं हुआ है या तो वही लेवल पे से मैं ये आइटम निकालूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ये सब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे कस्टमर्स को समझाते हैं कि उनकी भी ऐसा भी नहीं कि स्टेज बाय स्टेज करने से उनका काम भी काफी लंबा हो जाए। सो इफ दे वांट टू अचीव दिस, दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो हमारे पास हैं। प्लानिंग की मैं बता दूं तो हमारे पास है शॉर्टेज रिपोर्ट। सुनील भाई आज हम शॉर्टेज रिपोर्ट भी दिखा दे, अब तक हमने शॉर्टेज रिपोर्ट की we have not discussed, but since we are talking of very critical features, कैसे किस किस लेवल पे आप शॉर्टेज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इस एक साइड के लिए सब एसजीओ के, सब फोरकास्ट एसजीओ के, पूरे कस्टमर ऑर्डर्स के, सो तीनों कोई भी ऑप्शन से आप शॉर्टेज या तो सिलेक्टिव या तो ऑल करके निकाल सकते हैं। खाली कोई एक का निकाल लो आप तो रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा। Of course, there is a, as you can see on your screen, print will be on a printable paper. View will be a single line Excel based output, Excel equivalent output, which you can export it into Excel and send email is obviously that email that you can send. So we will show you all the three for a particular SEO so that you can relate. Right? So ये प्रिंट किया तो ये A4 में ऐसे दिख रहा है कि ये मेरा एसजीओ था, ये एसजीओ इसे ओएफ के सामने था, अगर मल्टीपल होते तो ये भी यहाँ आ जाता था। उसमें ये रिक्वायरमेंट थी, उसमें से शॉर्टेज क्या है, ऑन हैंड मेरे पास क्या है। देखो यहाँ पे सिचुएशन ये एलोकेशन के पहले का केस लगता है, तो एमएस शीट मेरे को रिक्वायरमेंट शॉर्टेज एक की है और ऑन हैंड 7 पड़ी है, बराबर है। यस, एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी 10 है, बराबर। सो आई कैन यूज दिस। एलोकेटेड ऑलरेडी 9 है, तो अभी मुझे एक की शॉर्टेज है और मेरे पास और 7 पड़ी है, आई कैन एलोकेट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द शॉर्टेज रिपोर्ट। यही शॉर्टेज रिपोर्ट को आप व्यू के तौर पे भी देख सकते हैं। व्यू में right, so it is available to you on your screen as well as you can export it to Excel, right? ये 3 आइटम चाहिए, इसको यहाँ ही आप, there is going to be a facility that you can filter from here or search from also here without even going into export, but otherwise you can export to Excel and then act upon it, right? So this is something that I wanted to show you on the shortage report. Other report we have already talked about is allocation done, issue pending. Similarly, when the SGO is has multi-level bill of material positions, we had said position is important.
So we can see position wise shortage report also. There is a material availability report which is important for you to know. There are status reports. We will have separate sessions or on need basis we can give you the our colleagues can give you the importance of what are the reports available, because there are a lot of information that users can uh, get from using the system appropriately and correctly, right? There is a costing also, that we will take costing as a separate thing, right? So as far as today's session is concerned, I have covered the agenda that we had planned. We can do one thing, we can also show Sunil एक return note दिखा देते हैं. तो logically जो हमने बात की, though it is not a part of planning module, but let us show one return note and based, yeah, return note का screen, yes. मतलब मेरा इश्यू किया गया जो मटेरियल है उसको अगर मुझे रिटर्न करना है, बराबर है, इसको रिटर्न करना है तो जो डेटा इसमें हमने जो वर्क ऑर्डर लिया उसका सब इंफॉर्मेशन आ गया, एक्सपांड ऑल किया तो नीचे आइटम भी अवेलेबल हो गई, ये सब आइटम्स अवेलेबल है. आई कैन सिलेक्ट ऑल द आइटम्स और आई कैन जस्ट सिलेक्ट रैंडम कोई भी एक आइटम और उसमें से पूरी क्वांटिटी या पार्शियल क्वांटिटी. सुनील आप कोई भी एक ये 720 इशूड क्वांटिटी वाली आइटम ले लो ना, चलेगा. सेकंड नंबर, हाँ व्यू मोड में हो, सॉरी एडिट मोड में ऑलरेडी कर दिया है. आई एम सॉरी बट से हियर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 80 क्वांटिटीज हैं. अगर ये एडिट वाले टाइम पे होता, ये उसके क्लोज नहीं हुआ होता, तो मैं इसको 80 में से रिटर्न करने के लिए आई कैन, अरे सॉरी सुनील આગળ છે हाँ बता, सॉरी बता. ओके सॉरी माय मिस्टेक. रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है 40 मैंने रिटर्न की है, तो मैं देख सकता हूँ और ये रिटर्न की हुई क्वांटिटी को मैं फिर डीएलोकेट करके किसी और एसडीओ के सामने भी ले जा सकता हूँ. और ये रिटर्न नोट वगैरह भी डॉक्यूमेंट प्रिंट के तौर पे पूरे हिस्ट्री मेंटेन होते हैं. सो ये रिटर्न, सिंस इट वाज लॉजिकल फॉर मी टू टॉक टू यू बिकॉज इट्स अ प्लान ऑफ मटेरियल प्लानिंग. सिमिलरली रिजेक्शन नोट भी है. जैसे आप रिटर्न कर सकते हो, ऐसे शॉप के बेस पे कुछ भी रिजेक्शन हुआ तो रिजेक्शन विल आल्सो ऑटोमेटिकली, रिटर्न या रिजेक्शन विल ऑटोमेटिकली बिल्ड द will refresh the demand. ठीक है, रिजेक्शन भी लिखा है. From the planning point of view only, PPC point of view. From quality point of view, we will still see one more time, right? ठीक है सुनील, that's fine. All right. So by and large, we have covered our planned agenda today. I am taking a break and I will unmute you all so that you can, if you have any questions, we can address them. Thank you for your patience. Thank you for your interest. Thank you for your continued interest on almost on a every alternate day basis. Next session we will take on, that we plan to take on Wednesday, will be on quality, and so what is something that we offer on the quality side, or we will we can cover the yeah, I think Sunil we will take that procure to pay part. I think yeah, that would be better, that we will take quality and simultaneously we also take purchasing में जो हमने बाकी का फाइनेंस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेना है हमें, वो हम लेके, जैसे मटेरियल रिसीव हुआ उसका क्वालिटी हुआ
का बिल बुकिंग हुआ। क्वालिटी के लिए जो फीचर्स दिखाने हैं वो मैं इसके साथ आपको दिखा दूंगा, जैसे मैंने एसजीओ में आप लोगों को दिखाए थे वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और वर्क ऑर्डर के टाइम पे प्रोसेस शीट दिखाया था। तो ऐसे ही क्वालिटी हम लेंगे प्रोक्योर टू पे में। अभी प्रोक्योर से जीआरएन और क्यूसी से आगे वाला साइकिल अप टू पेमेंट, and simultaneously we will also show you the importance of and the features that are available as masters in the quality, because that will also cover the rejection part, acceptance rejection, and we will show you that as well, right? If time permits, then we will take also the, because invoice part we have taken, I think we should be able to do it. So if time permits, we will also take the bank receipt also simultaneously along with the bank payment, right? Okay. May no, I think we will see, right? Thank you for your time and attention.